एक बहुत ही स्पेशल दिन आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए, बिकॉज सो फार ये आईपीएल अपनी राइवलरीज के लिए जाना गया है। हम लगभग हर मुकाबले में बात कर रहे हैं जिस तरह की राइवलरीज टीम्स के लिए देखी गई है, एक दूसरे के होम टाउन में जाकर के मैचेस जीतने वाली। अब उस लीग में नाम शामिल हो गया राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का भी, बिकॉज सो फार 6 टीम्स मेंटेन कर पाई इस राइवलरी को, एक दूसरे के होम टाउन में जाकर के मैच जीतने की। और आज बारी है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की सेम काम करके दिखाने की, बिकॉज लास्ट टाइम जब राजस्थान और गुजरात इस सीजन एक दूसरे के आमने सामने हुए थे, तब गुजरात टाइटंस अपना होम टाउन में मुकाबला हारी थी राजस्थान से। और अब बारी है, फिर से मौका मिल रहा है गुजरात टाइटंस को इसी रिडम्पशन को करने के लिए। बट क्या ये ऐसा कर पाएंगे ना? अब ये सवाल मैं पूछती हूँ कौस्तव से। कौस्तव, बाय जस्ट सिंपली लुकिंग एट द प्रीवियस finalist of the season, are Rajasthan Royals and Gujarat Titans. They both have really showed the intent to win the match. इस सीजन की भी बात करें या लास्ट सीजन की भी बात करें, बट जो रिडम्पशन चल रहा है, जो राइवलरी चल रही है, कैन दे रियली पुल इट ऑफ? कैन गुजरात टाइटंस विन दिस अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स इन देयर होम टाउन? Yeah, of course, there's a chance when you talk about these two teams. These are very quality teams. They are, I believe, a champion side. Last year, Rajasthan missed it by a whisker, and this year again they have a very solid team that can challenge for the title. I personally feel that Rajasthan Royals are definitely one of the two teams who can win the title this season. So is Gujarat. Gujarat are playing some fantastic brand of cricket. Yes, they lost the last match against Delhi Capitals, who are at the bottom of the table at the moment. But then again, they have a quality side. Hardik Pandya is scoring runs. Mohammad Shami has been brilliant with the ball, and so is Mohit Sharma and Noor Ahmed. With the bat, I think Shubman Gill needs to be a bit more consistent, and so is Riddhiman Saha. See, Riddhiman Saha last day was brilliant behind the stumps, but then again with the bat, he hasn't done much, and I think that is one such area that he'll have to improve as well. Because when you're going to the business end of the tournament, you need players to step up. You need experienced players to step up as well, because as we can see, Gujarat has now. Manohar, probably Abhinav Manohar will be batting at number 3. He doesn't have a lot of experience. David Miller is doing the job at the towards the back end of the match, or any match rather. So players at the top order needs to fire, and I think Riddhiman Saha and Shubman Gill will have to be a bit more consistent in order to beat Rajasthan, because again Rajasthan will come hard at them in their home turf. Right, and with that, we have got an update on toss as well. कि Rajasthan Royals have won the toss and they have opted to bat first. और राजस्थान सिंस अपनी पहली बैटल तो आज के मुकाबले की उन्होंने जीती है, विच इज द टॉस। अभी नेक्स्ट होगा कि ये मैच कौन जीतेगा। बट एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट आया है हियर। वन पर्सन, लेट मी टेल यू द नेम, I cannot pronounce, but he has said GT will win by 28 runs. Very precise. Like, I don't know how to predict this much कि GT will win by 28 runs, but I like the confidence though. But let's take a look at head to head of Rajasthan Royals and Gujarat Titans की उनके numbers क्या कहते हैं। Well, अगर हम head to head की बात करें तो स्टार्टिंग से ही, अब मैं शुरू से सुबह से तो फिलहाल यही सुन रही हूँ कि गुजरात टाइटंस ने 3 मैचेस जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 1 मैच जीता है, टोटल 4 मुकाबले खेले हैं। और ये जो एक मुकाबला राजस्थान ने जीता है वो इस सीजन का ही है। इसके पहले 3 मैचेस बैक टू बैक गुजरात टाइटंस ने जीते थे, जो कि लास्ट सीजन के मुकाबले थे। और उस नंबर के हिसाब से तो गुजरात का अपर हैंड रहा है राजस्थान के ऊपर। बस इस पर्टिकुलर सीजन की बात करें तो वो राजस्थान ने जीता, बट दैट वाज नॉट अ इजी विन। राजस्थान को बहुत इजी विन नहीं मिली थी गुजरात के अगेंस्ट, इट वाज अ टफ वन। सो इस मैच में किस टीम पर ज्यादा प्रेशर होगा? इज इट गोइंग टू बी गुजरात और राजस्थान रॉयल्स? देखिए, गुजरात के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने 130 को चेज नहीं कर पाया था, दिल्ली के अगेंस्ट हार गया था। फिर हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बोला है कि आई टेक ऑल द ब्लेम एंड ऑल दैट, बिकॉज आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था लास्ट मैच। मोहम्मद शमी ने पावर प्ले में 4 विकेट लिया था। दिल्ली आई थिंक 25 पे 5 विकेट हो गया था, बट उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा रन बनाए थे, जो दिखने एट टाइम मेरे को लगा नहीं था कि इतना रन वो बना पाएंगे। और उस मैच गुजरात हार जाना शायद मेंटली बहुत चैलेंजिंग हुआ होगा प्लेयर्स के लिए कोप अप करना इन लास्ट 2-3 days। व्हेन इट कम्स टू राजस्थान, दे स्टार्टेड द सीजन रियली वेल, बट अभी मेरे को लग रहा है, देखिए यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जुरल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे बैटर्स उतना खास कुछ करे नहीं अभी तक। जॉश बटलर, हमें पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जॉश बटलर इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, but he hasn't done much this season, to be honest. And so is Sanju Samson. He has been very inconsistent, in my opinion. I think Sanju Samson is a class batter. He always starts the season really well, but then again, at times he gets lost in his momentum. Something or the other happens. So I think Sanju Samson is a very important part of Rajasthan Royals, and he'll have to play the brand of cricket he is known for playing. And yes, Dhruv Jural and Yashasvi Jaiswal, like I said, they are playing really well, and Rajasthan will depend a lot on
their shoulder actually. When it comes to the pressure, I think both the teams will have the pressure at the moment, because again we are approaching to the business end of the tournament. Even though Gujarat is at the top of the table, but their place is not yet guaranteed. And when it comes to Rajasthan, they are probably fourth on the table, and there are three other teams with the same number of points. So Rajasthan can't afford to lose any more matches at the moment. Thus, I think दोनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी अगेन लाइक आई सेड पॉइंट आप नहीं गवा सकते हो इस एज में आके। 10 मैच हो गए, आपको अपना टीम कॉम्बिनेशन शायद और बेहतर पता है कि क्या करना चाहिए, और राजस्थान स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो Hmm. ऑफ कोर्स एडम जाम्पा आ रहे हैं उनके टीम प्लेइंग 11 में। तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हम एक्सपेक्ट करेंगे, और दोनों के पास बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर है। राजस्थान के पास बात करें तो फिर रविचंद्रन अश्विन, यजवेंद्र चहल एंड एडम जाम्पा, सॉलिड कॉम्बिनेशन है। और दूसरी तरफ आप देखिए तो राशिद खान एंड नूर अहमद जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस सीजन। तो आई थिंक एक बहुत एक्साइटिंग बैटल देखेंगे, और प्रेशर तो दोनों के ऊपर रहेगा, बिकॉज अगेन दे विल हैव टू विन। Right, you cannot be really confident about your opponent because you never know. It's cricket. Anything can happen at the very last moment. But let's take a look at the pitch report of this match because सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस सीजन अभी दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही एकदम पोल्स अपार्ट पिचेस कंडीशंस के साथ उतरे थे। सो देखना होगा कि इस मुकाबले में किस तरह से पिच बिहेव कर सकती है बिकॉज उस पर बहुत मैटर करेगा दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस। So the strip at the Savai Mansingh Stadium is a balanced one. Teams batting first have managed to win both matches played so far at the venue in IPL 2023 और इस मुकाबले में भी जो टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स ने उन्होंने पहले बैट करने का ही ऑप्शन लिया विच वाज अ सेफर वन। बट एक बार अगर हम आपको वो पिच रिपोर्ट बताएं जो दीपदास गुप्ता ने स्टेडियम से दी है दैट इज 63 and 68 meters hits to the square boundary 78 meters down the ground. I don't think this is the easiest pitch to sum up. There are some bare patches but there are spots where there is a good covering of grass too. May not be too paced but could play low generally. Decent pitch 170 180 kindish I would say. Last couple of matches we did not have due. So might as well bat first, opines Deepdas Gupta. So again, this is not a very clear pitch report कि इस pitch पर आपको क्या देखने को मिलेगा, but certainly ये ग्रेजुअली गेम जैसे जैसे प्ले आउट होता जाएगा वैसे वैसे समझ में आएगा। इन शॉर्ट फर्स्ट इनिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये पिच कैसा बिहेव करने वाली है। ऐसे में कौस्तभ जब इस तरह की कोई पिच होती है तो ऐसे में आप अपने टीम के बॉलर्स की तरफ बहुत फोकस करते हो और दोनों ही टीम्स थैंकफुली जो दोनों ही टीम्स के बॉलर हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं इस सीजन। अगर मैं स्पेसिफिकली गुजरात टाइटंस की बात करूं तो उनके पास जो बॉलर हैं लाइक मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा स्पेसिफिकली जो अभी तक इस सीजन काफी अच्छा कर रहे थे, दोनों ने अपनी पूरे सीजन इकोनॉमी 6 अप्रॉक्स मेंटेन करी हुई है विच इज अ रियली गुड मार्क, वो भी जहां पर 200 प्लस स्कोर्स बहुत ही इजीली जा रहे हैं। ऐसे में आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो अपनी इकोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे पेसर्स हैं और प्लस आपके पास स्पिनर्स के नाम पर राशिद और नूर अहमद की जोड़ी है विच इज अ रियली गुड वन। नाउ इफ वी गो बाय टुडेज पिच रिपोर्ट और टुडेज कंडीशंस एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम, if we go by the bowling lineup, who has a better lineup? Is it Gujarat or Rajasthan? Probably I will keep Rajasthan a bit ahead, even though Gujarat has players like Mohammad Shami and Rashid Khan who have been brilliant so far in the tournament. But I think Rajasthan is slightly ahead just because of the Ravichandran Ashwin factor. I think in the middle overs he can come in and he can prove to be really economical, and he's tailor made for pitches like this where the ball will keep low, where the ball will turn a bit. And Yajuvendra Chahal, we know he has the class, and even though he has picked probably 2 wickets in the last 5 matches, if I'm not very wrong, so he's not among the leading wicket takers at the moment. But then again, he has the charm, he has the ability. See, Savai Mansingh Stadium is a huge ground, so Hmm. like the ball he'll toss up. I think the batters may find it difficult to play. And Adam Zampa, we know he has the quality. He has played really well for Rajasthan in the past, or even for Royal Challengers Bangalore. He got limited opportunities, but then he did his job. It's not easy to bowl at Chinnaswamy, but he did his job in the past. So I think he has the experience as well. So I'll keep Rajasthan a bit ahead just because of the three spinners, the quality spinners they have. But then again, you can't really bet against Gujarat Titans because Rashid Khan on his day can wreak havoc with the ball and can do whatever the hell Rashid Khan wants to do, I believe. And again, Mohammad Shami is doing really well. Picked up 4 wickets in the power play in the last match. So it's a balanced contest. I think it's the batters who will have to deliver in today's match. It's not just the bowlers. Just because Rajasthan's again they have two-man army. Rajasthan, I believe, at the moment.
Yashasvi Jaiswal and Dhruv Jurel. And when it comes to Gujarat Titans, last match they failed to chase 130 odd runs against DC, so they will be under pressure. They will be once again chasing this in this match. And if suppose Rajasthan puts 150 on board, I think the pressure will be on Gujarat Titans because they will be very underconfident after their previous match. Right, and even Gujarat Titans having Rashid Khan and Noor Ahmed, they have got all the support from Afghanistan as well, and you know the reason because in this season particularly we saw Naveen ul Haq versus Virat Kohli and RCB versus LSG, basically जिसके चक्कर में सब चाहते हैं कि ये teams final भी खेले, but having Rashid Khan and Noor Ahmed in Gujarat Titans, all the Afghanistani people are supporting Gujarat Titans in this IPL for many reasons for sure, but definitely support is not a thing जो कि आपको matches जितवाए, but it is a good sign for Gujarat though that they have added some fans outside India in their kitty for sure. But let's take a look at the player to watch out because दोनों ही teams के end से बहुत ही ऐसे skilled और बहुत ही ऐसे interesting players हैं जो कि आज के इस मुकाबले में जिन पे नजर रह सकती है. तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस के एंड से शुभमन गिल जिन्होंने 83 मैचेस खेले हैं और टोटल 2239 रन्स बनाए हैं, वहीं हाईएस्ट उनका रहा है 96 का. इफ यू गो टू राजस्थान रॉयल्स, वहां के प्लेयर टू वॉच आउट कौन है आपको वो भी दिखा देते हैं. दैट इज जॉस बटलर. 90 मैचेस ही हैज प्लेड, 3120 रन्स जॉस बटलर की किटी में, प्लस 124 उनका हाईएस्ट रहा है, विच इज अ गुड साइन. कौस्तम, हमने अपने एंड से प्लेयर टू वॉच आउट बताए हैं, विच इज शुभमन गिल एंड जॉस बटलर. बट आई वुड लाइक टू नो इफ some people who are looking to create their team in fantasy leagues, so any four player you could pick from both the teams to give them a cue कि इन्हें मिस आउट नहीं करना चाहिए आज के मैच में. देखिए, आप यशस्वी जायसवाल को तो डेफिनेटली मिस आउट नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट मैच में ही उन्होंने सेंचुरी मारा है, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला है. आई थिंक पूरा हफ्ता उसी के बारे में हम लोग कवर कर रहे थे. विराट कोहली और नवीन उल हक डेफिनेटली एंड केएल राहुल डेफिनेटली, बट अदर देन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट यशस्वी जायसवाल सेंचुरी. ही इज द यंगेस्ट एंड द youngest uncapped player to score a century or break some record. That kind of thing happened. So you can't really keep Yashasvi Jaiswal out, and so you can't keep players like Yajavendra Chahal or Ravi Ashwin out as well. I'll keep Ravi Ashwin and Yashasvi Jaiswal because Ravi Ashwin is once again back taking wickets and he's economical as well. When it comes to the other team, Gujarat Titans, I think Noor Ahmed will be one of the very key players in today's match. He's doing really well. He's being economical. Along with Rashid Khan, the pair actually is brilliant for Gujarat. They're working at the moment. That is very important. And the batter from Gujarat, I think either of Shubman Gill or Hardik Pandya will have to step up. Shubman Gill is not playing really well in the last 2-3 matches, if I'm not very wrong. And Hardik Pandya again scored a half century, but it went in vain in the last match. So he'll have a point to prove in this match. So these are the 4-5 players that I think everyone should keep in their team, in the fantasy team. राइट, और अगर इनमें से किसी एक को कैप्टन बनाना हो तो कौन सा प्लेयर हो सकते हैं? I think I'll go with Yashasvi Jaiswal because the kind of form he is in right now, you can't really bet against him. It's a stadium he's very well accustomed to. He has played a lot of matches in Savai Mansingh. And again, you can't go against form. The kind of form he has shown, the kind of maturity he has shown at the age of 21, I think it's brilliant. And everyone is expecting him to feature in the Indian team sometime soon, if not Indian team, the India A team. With experience, is someone I can't recall the name at the moment, but one of the legends of Indian cricket recently said he's a three-format player. So there's a lot of expectation from Yashasvi Jaiswal to score really good, like have a really good IPL and then get into the Indian team, probably in the T20I series against West Indies or in the a series that is BCCI planning for the five-team series in the month of probably August instead of Asia Cup. Of course, that's not confirmed yet. So I think Yashasvi Jaiswal will get a lot of opportunities in the coming times, and this is the right platform for him to show his skill. And I believe with more time, with more experience, he's definitely going to be one of the players to watch out for in the coming times. And I think he's in the form of his life right now, and he should enjoy it. Definitely. Now we have got some changes in the playing 11 as well, but let's take a look at the playing 11 of Rajasthan Royals and Gujarat Titans, as both the team have got their best 11 to support themselves in today's match in Savai Mansingh Stadium. So it is Gujarat's team number 1. So let's take a look at the team. Okay, so गुजरात की टीम की जो 11 है वो हम आपको बता देते हैं. दैट इज रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर,
Abhinav Manohar, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohit Sharma, Noor Ahmed, Mohammad Shami और Joshua Little. Now if we go to Rajasthan Royals playing 11 तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स आज आपको दिखाई देगी उनकी आउटफिट. सो राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, Shimran Hetmyer, Dhruv Churel, Ravichandran Ashwin, Trent Bolt, Adam Zampa, Sandeep Sharma, or UG Chahal. And now I've got some new name in Rajasthan Royals, and that is Adam Zampa in place of Jason Holder. He's a very exciting talent, Costa, when it comes to the kind of player he is in itself. और एडम जैम्पा आज के टीम में एडिशन होकर के प्लस उनके साथ अश्विन भी होंगे वहां 11 में. इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी बोथ ऑफ देम प्ले टुगेदर एंड गुजरात के लिए आई गेस ये मुसीबत बढ़ा देंगे. अभी मुझे राशिद और नूर की जोड़ी देख करके लग रहा था कि गुजरात का लिटिल अपर हैंड है, बट यहाँ पर अश्विन और जैम्पा अगर साथ उतरे तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है गुजरात के लिए. बट हु लुक्स मोर इंटरेस्टिंग राइट नाउ? Again, like I said previously, I think the Ashwin, Zampa, and Chahal pair looks really exciting right now. They are three quality spinners, and who can pick you wickets. It's just not that they'll be economical. They will come at hard at you. And since they have two more spinners in the form of Zampa and Ravi Ashwin, I think Yajavendra Chahal will be more aggressive and will be desperate to take wickets because there are other spinners who can prove to be economical. He'll not have to hold one end. And Ravi, the kind of form Ravi Ashwin is in, I think he's ready. He's getting ready for the upcoming ODI World Cup. I'm not really sure, but of course he'll have something. Have that definitely on his head because he's in brilliant form right now. This is a different Ravichandran Ashwin, I believe, because again in the last 2-3 years he was economical, but he was not picking a lot of wickets. But this season, I think it changed. He's picking a lot of wickets, and in spin-friendly tracks like the one we'll have today, I think it will have the spinners. I think Ravichandran Ashwin will be definitely one of the key players in today's match, and so will be Zampa. Again, in spin-friendly tracks, they can prove to be really, really difficult to read. Again, you can't bet really against Rashid Khan and Noor Ahmed. Noor Ahmed is in great form. Rashid Khan is one of the leading wicket takers in the tournament. So it will be a battle of the two spin departments, and the better the like if Rashid and Noor does really well and restricts Rajasthan to a really low total, then of course they'll hope for winning the match. But then in the second innings, when the match will get wicket will get slower, Ashwin and Zampa and Chahal can prove to be really, really dangerous against GT batters who are not really doing well at the moment in slow pitches. राइट. सो बेसिकली सबका स्टेक अभी राजस्थान रॉयल का बढ़ गया है आफ्टर जस्ट सिंपली लुक इन अश्विन चहल एंड एडम जैम्पा इन देयर साइड. सो राजस्थान रॉयल्स पर आज तो मैं भी रिलाई करूंगी और मुझे भी लगता है कि शायद आज गुजरात टाइटंस का मौका नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस ट्रियो ओनली. आई एम टेलिंग यू बिकॉज बोथ द टीम्स हैव गॉट रियली गुड नेम्स. यू कैन नॉट रियली गो टू वन सर्टेन टीम बिकॉज दिस प्लेयर इज देयर, बट इफ यू गो बाय द पेयर्स देन डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स के पास आज जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसका कोई जवाब नहीं. बट नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सोशल ट्रैकर एज वेल. किस तरह का डिस्कशन जारी है इस मैच को लेकर के. सुबह से सारे फैंस एक दूसरे के साथ कई सारे डिस्कशंस कर रहे हैं और हम देखते हैं पहला ट्वीट हमारा. Bolt versus Saha tonight. Bolt gets Saha 3 times in 24 balls with just 22 runs conceding. और रिद्धिमान साहा की अगर बात करें तो वो भी काफी अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं गुजरात टाइटंस के एंड से. इनिशियली जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो 30 के एवरेज से रन बना रहे थे, which was not that big number but still it was helpful. बट उसके बाद में थोड़ा डिप हुआ है उनके जिस तरह की उनकी स्कोरिंग एबिलिटीज थी. बट आज के मुकाबले में उनको देखना होगा कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर ट्वीट. सो ये हम देख सकते हैं केएल राहुल के ऊपर ये ट्वीट है. केएल राहुल सेड एब्सोल्युटली गटेड दैट आई वोंट बी एट द ओवल नेक्स्ट मंथ विद टीम इंडिया WTC फाइनल. केएल राहुल रूल्ड आउट ऑफ IPL 2023 एंड WTC फाइनल. दैट्स अ ह्यूज न्यूज टुडे. कॉस्ट तब हम लोगों को ये मिली सिंस हमें लग रहा था लास्ट मैच में उनकी इंजरी हुई थी. स्टिल वो खेलने के लिए उतरे थे LSG के लिए, बट आफ्टरवर्ड्स उनकी इंजरी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि उसके बाद से वो IPL से भी रूल आउट हो गए और इवन WTC फाइनल से भी उनको रूल आउट होना पड़ा. बट दैट इज अ ह्यूज ब्लो टू टीम इंडिया फॉर श्योर बिकॉज ही इज सच अ गुड कैलिबर के प्लेयर. और केएल राहुल को इंडिया टीम मिस करेगी फाइनल में. जी देखिए, डेफिनेटली केएल राहुल को एक बड़ा धक्का मिला है इंडियन टीम को. केएल राहुल नहीं रहेगा बिकॉज इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा है और शायद हम ये भी सोच रहे थे कि शायद अगर गिल और रोहित के साथ भी हम ओपनिंग करें तो शायद केएल राहुल मिडिल ऑर्डर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है. टीम का नंबर 6 पे शायद बैट करता है, लेकिन अब केएल राहुल नहीं है तो शायद केएस भारत का प्लेस गारंटी हो गया टीम इंडिया में. सुनने को आ रहा है कि ईशान किशन कैन बी वन ऑफ द रिप्लेसमेंट्स ऑफ केएल राहुल, बट नथिंग इज गारंटीड अगेन.
But then again, Ishan Kishan will definitely not play in the World Test Championship final. Only if KS Bharat gets injured, then there's a chance Ishan Kishan will get back into the team. But again, the kind of experience KL Rahul has, and his record speaks a lot in Test cricket, and especially in England. I think it's a big miss, but then again, we hope he recovers well because World Cup is coming and he's a very, very, very important part of the ODI team, more than the Test team. Because with Rishabh Pant right now not there in the mix, KL Rahul is the obvious choice you can have in ODI cricket because Ishan Kishan is not going to bat at number five. Shubman Gill will be opening the side for sure, along with Rohit Sharma. So where will KL Rahul play? And we have groomed him in the last 2 3 years at number five in for ODI cricket. So we can't really miss out on KL Rahul in the ODI World Cup. I hope he recovers. Before that, he gets a lot of game time before that, so that he gets into the mood. When it comes to World Test Championship, yes, of course, it's a big miss. But with KS Bharat in there, I think it's okay. It's okay, I believe. But then again, KS Bharat is not a big. KS Bharat is not someone who will score a lot of runs for you, especially in England where the ball really swings and he doesn't have a lot of experience in playing in England, something that KL Rahul has. So again, yes, it's a big miss. Right. Though I don't know about this WTC final, what selectors might do to replace KL Rahul with some player. But in ODI World Cup, if during that time, even if KL Rahul is not prepared to join the team, he's not fit enough to join the team, can Rishasri Jaiswal be that person for Team India to replace KL Rahul? No, not really. Yashasvi Jaiswal is definitely not the player to replace KL Rahul in the ODI World Cup. Of course, he's an exciting talent, but you just can't jump some player from this stage to there. I think there are a lot of players who can replace KL Rahul. Ishan Kishan being one of them. I don't think so. Then Shubman Gill will be part of the 11. If Ishan Kishan is there, Ishan Kishan will be opening the innings along with Rohit Sharma. So in that case, Shubman Gill will probably miss out. And number five, we might see if the Indian team management decides to go with Shubman Gill and KL Rahul pair, then probably at number five we'll see Sanju Samson, who is a very exciting talent, and in Indian conditions he can break Oh, havoc. yes. Yes. So that can be an ideal replacement for KL Rahul. Yashasvi Jaiswal is not even a keeper. I think India right now needs a wicket keeper batter who can play in the middle order. So in that category, Sanju Samson is an excellent fit. He'll since KL Rahul is currently injured and uh, will miss probably next 1 2 months for sure. He'll Hmm. undergo a surgery. So definitely 2 3 months he's going to miss. In that place, I think Sanju Samson will might get a lot of opportunity to play for India. And if he proves himself, who knows? He'll be part of the 11. Even if KL Rahul is there. Last time we saw same thing happen with Dinesh Karthik in the T20 World Cup, with Rishabh Pant getting dropped and Dinesh Karthik getting more opportunities. So this might happen as well if Sanju Samson proves himself in the middle in place of KL Rahul. Then probably Sanju Samson will be in the 11. And I know many of them actually believe Sanju Samson should be in the playing 11 instead of KL Rahul. But then again, KL Rahul has proved himself in ODI cricket. There's no doubt about that. So of course, if Yeah. KL Rahul misses out in the ODI World Cup, then it's a huge, huge miss, and this is way bigger miss than the upcoming World Test Championship in England. राइट सो मतलब व्हिच मींस कि आने वाले 2-3 सालों में अभी यशस्वी जायसवाल का कोई चांस नहीं है इन इंडिया टीम इज इट लाइक दैट Post World Cup, there's of course a chance in the Indian team. Probably Rohit Sharma, Virat Kohli will not play all the matches going forward in order to manage his workload, their workload rather. So Yashasvi Jaiswal, if he proves himself for the Indian team, when he'll be part of the Indian team, Indian A team did not play a lot of matches or hardly any matches in the last 2 3 years because of COVID. But now the tours will begin once again. So he'll have to spend a lot of time with Vivesh Laxman in the NCA. He'll have to learn a lot of things. International cricket is completely different. He's doing well in IPL, good. He's doing in domestic cricket, great. But then again, international cricket is a different thing. It's a different ball game. He'll have to play a lot of cricket in order to get ready for international cricket. So I'm expecting him to be part of the Indian or T20I team. When it comes to ODI cricket, yes, he might get an opportunity when others are not available. To be very honest, Ishan Kishan and Shubman Gill has proved in themselves so far in the 50 overs format. So Shubman Gill will obviously be there, but if Ishan Kishan fails to fire, then I think Yashasvi Jaiswal can make his way into the team, and will have to wait for his opportunity because again he's 21 years old. Others have already proved themselves, so BCCI can't really drop other players in order to give Yashasvi Jaiswal a chance.
So I think Hmm. maybe with time he'll get more game time, and he'll have to wait for his opportunity. And when he will get the opportunity, I think he'll have to prove himself, because in Indian team we will not get a lot of opportunities. राइट। अभी इस डिस्कशन में मुझे ये बात फिर से एक बार प्रूव हुई है कि सिलेक्टर्स का जॉब काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज यू गॉट अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू गिव देम इक्वल चांसेस एंड देन यू डोंट नीड टू एनीवन टू गेट disappointed with the chances they are not getting, but then you have need to maintain everyone's confidence in themselves, and you have to give the best 11 to the team India as well. It's really difficult job to do, but mine is easy because I have to just tell you the tweet, which is the next one right now in social tracker, what people are discussing about Rajasthan Royals versus Gujarat Titans. ये ट्वीट है हार्दिक पांड्या वर्सेस युजवेंद्र चहल के ऊपर। और जब भी हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए उतरते हैं, राजस्थान रॉयल्स का सबसे पहला जो गेम प्लान होता है उनके अगेंस्ट, दैट इज यूजी चहल। बिकॉज रीजन भी है, उन्होंने उनका 3 बार विकेट लिया है, और इसके अलावा 48 बॉल्स में 55 नो 55 बॉल्स में 48 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। सो हार्दिक पांड्या इज क्वाइट समवन जिनको यूजी चहल अपने लपेटे में आराम से ले लेते हैं, जैसे नंबर्स फिलहाल बता रहे हैं। तो आज भी हो सकता है ये गेम प्लान देखने को मिले, बट आज ये लड़ाई कौन जीतेगा ये इस मुकाबले को देखकर जरूर पता चलेगा। अब देखते हैं अगला ट्वीट। यशस्वी जायसवाल के ऊपर ये ट्वीट है, जिस तरीके के उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं उसका एक ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। व्हाट अ जर्नी, 100 इन अंडर 19 वर्ल्ड कप, 100 in Ranji Trophy, Irani Cup, Duleep Trophy, Vijay Hazare, India A, and in IPL. He is just 21. Take about Jaiswal. And definitely जिस तरीके से रिकॉर्ड्स ये ब्रेक कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, चाहे जब भी मौका मिले, लेकिन जब मिलेगा तो मजा आ जाएगा इनको देख करके, जिस एग्रेशन से ये खेलेंगे। बट थैंक यू सो मच कॉस्ता फॉर जॉइनिंग मी, एंड आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बट विल कम बैक आफ्टर द मैच एंड विल डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट क्रिकेट टुडे। और राजस्थान रॉयल्स की इस राइवलरी के बारे में गुजरात टाइटंस के साथ भी जरूर डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिक ट्रैकर्स इन द एयर शो।